रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ओके, मैं मैडम को कॉल दे दो। हाँ, जस्ट मिस कॉल दे दो, शी विल ज्वाइन। अभी हाँ बात होती है वो कंप्यूटर वाले को मैंने बोल दिया अभी ज्वाइन करेगा सर मैडम का अभी करवा रहा हूँ। मैडम अच्छा अच्छा, तो शुरू कराएंगे। सर मैडम कोई बैनर तो होना चाहिए अच्छा अच्छा, मैं करवा दूँ करवा। कुछ अभी सर नहीं है लिखे हुए सर नहीं है मैडम बात करिए आ जाइए। Good morning, everybody. I hope you are able to listen. Am I audible to you? Professor Tiwari, am I audible to you? Yes, you are Yes, audible. you are. Okay, I have just now spoken to Professor D.K. Agarwal from Aligarh, and he said he is in the process, he will join. So should we start this our procedure? Yes, we can proceed. The हाँ time सर, is very we can important. proceed. He has just spoken that he will be joining soon, and he's बता दिया उनको ज्वाइन कर लेंगे। हाँ। So Professor Vasudev Singh Saab from Jhansi, Madam Professor Tiwari from KGMU, Professor Nasing Verma from KGMU, and Professor D.K. Agarwal, and our on behalf of the University Kanpur, you are all welcome. Myself, Dr. Shakil Khidwai, Principal Hind Institute of Medical Sciences. I am basically an orthopedic surgeon, the professor of orthopedics, and on behalf of the university, we will start the
procedure for your faculty approval by the university. So we have in today's list those who have to be approved by this panel of experts: Professor Jayanti Singh of Physiology, Dr. Sunita Singh, Associate Professor, Dr. Rashmi Prakash, Assistant Professor, Dr. Ankita Prakash, Assistant Professor, Dr. Sharat Kumar, and Mr. Piyush Mishra as tutor. So, sir, if you permit, should we start with Professor Jayanti, who is Professor of Physiology at this institute? Madam Tiwari, should we start? Yeah, of course. He is You here can in start. front of me, so I will just turn this on her side. You introduce yourself. Good morning. Hello, sir. Good morning, ma'am. Hello, sir. I'm Dr. Chanti, Professor. I think you should speak louder. You My come. volume. Your voice is very weak. Please speak louder. See that the volume button is at the highest. Okay. I'm Dr. Chanti, Professor and Head of Physiology Department, Hind, In Sitapur. Sitapur. You tell, introduce when you did your UG, PG. Okay. So, all right. I did my undergraduation in SN Medical College, Agra. In 2004, I passed MBBS and I got registration in 2005. And then I did some demonstrator and tutorship in Saraswati Institute of Medical Sciences in the Department of Physiology. I joined that institution in 2008 and I resigned from there in 2010. And then I did my PG, post graduation in MD Physiology from Santosh Medical College in Ghaziabad. And I joined there in 2010 and I passed in 2013. हम अपना Then क्यों I तेज joined the करें? same institution, Saraswati Institute of Medical Sciences, again as an assistant professor. फिर भी नहीं दे रहा. And in the month of May 2013. And then I completed 4-year job there as an assistant professor. I हमें got सादा कागज promoted दे दो जी कुछ. and I resigned in the month of May 15th, 2017. And then I joined SP Medical College, Farukhabad. I was associate professor there, and 2 year I worked there. And then in 2019, I resigned from there and I joined Institute FH Medical College, Agra, and I did a 1-year job there as an associate professor. And I resigned in the month of July 2020. So that is my academic uh, experience and education. Can I question her? Yeah, sure, sure. Dr. Saab, your name, please. First, My your name name, is Dr. Jayanti Singh. Jayanti. And at present, you are professor here Yeah, in. Hind Medical College, Sitapur. Okay. Since you have been moving from one place to the other very frequently, off and on, can you just summarize the total experience which you had Yeah. since you have finished your post graduation after your PG? How many years of experience? Can you just total it and let us know? 4 + 3 as an assistant and associate. 7 years. Okay. Did you, all this total 7 years was in recognized, MCI recognized medical colleges Yeah. in India? Yeah. वो जो आप बता रही थी SD सिंह मेडिकल मेजर SD सिंह जो बता रही हैं, जी. that is was it recognized when you had joined there?
एक्चुअली मेजर एसडी सिंह में जब मैंने ज्वाइन किया देन वहाँ पर मैंने सिर्फ सप्लीमेंट्री बैच को पढ़ाया क्योंकि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला था एंड देन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेस लिए थे मतलब कि पूछने का पर्पस है कि एमबीबीएस की टीचिंग आपने करी, एमबीबीएस और एमबीबीएस और बीडी स्टूडेंट्स की। एमबीबीएस की टीचिंग सरस्वती में मैंने एमबीबीएस की टीचिंग करी एंड पीजी स्टूडेंट्स मेरे अंडर में थे, पीजी की भी टीचिंग करी। एसडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सप्लीमेंट्री बैच का टीचिंग किया एंड पैरामेडिकल का टीचिंग किया। एफएच मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का टीचिंग किया। So the total experience shown here is 7 years, Yeah. isn't it? Okay. Can you would like to see your MD registration by the Medical Council? Give me 1 minute. स्क्रीन शेयर कर दो। Post graduate registration. You have it or not? Yes, sir, just a while. स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, फिगर वर्किंग। अच्छा, अब पीडीएफ फाइल से वो स्क्रीन शेयर हो रहा है। अमित को बोल दो क्या है? It is already on the screen. It would have been very nice. हाँ, दिखा दो. Good. Good. And this is कानपुर यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ है बताइए? ये रजिस्ट्रेशन तो नहीं है ना? एमसीआई से रजिस्ट्रेशन होता है ना, काउंसिल से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इंडिया रजिस्ट्रेशन नहीं लगाया। स्क्रॉल अप हो सकता है मिल जाए, बाद में लगाई हूँ। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एमबीबीएस ये रजिस्ट्रेशन। देखो। एमबीबीएस के बाद एमडी का भी होता है। ये तो एमबीबीएस का है ना? चलो आगे बढ़ाओ। ये मेडिकल रजिस्ट्रेशन, ठीक है? रजिस्ट्रेशन ये तो एमबीबीएस का है ये। एमबीबीएस का है ये। ये है तो ये है। हाँ, ये दिस वन, इसका ये वाला पेज। एडिशन ये है, ठीक है, ये है। इसको ऊपर करो। 2013 में कराया है आपने। जी। ओके, ठीक है। Okay, it's all right. So presently you are working in Hind Institute at Ataria, Sitapur. Since last कब join किया यहाँ पे? 9th August 2021. अभी join किया मतलब? She has recently joined here. Okay. डॉक्टर वर्मा पूछ लो। टीचिंग एक्सपीरियंस टोटल कितना हो गया आपका? 7 years. 7 years, all recognized medical colleges? Yeah. जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो रिकॉग्निशन मिल जाता है मेडिकल कॉलेज का, तब से कैलकुलेट करते हैं। जी। या। तो आपने शुरू के जो बताए थे वो तो रिकॉग्नाइज तब थे नहीं। सरस्वती तो रिकॉग्नाइज्ड था शुरू से, और एसटी भी एंड एफएच मेडिकल कॉलेज ऑल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। एसडी वाला कहाँ रिकॉग्नाइज था उस समय? वो बाद में उसका प्रॉब्लम हुआ, बट उस वक्त वो रिकॉग्निशन था। अच्छा, तो अभी आप किस पोस्ट पर हैं? अभी मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर है, तो 7 साल में प्रोफेसर कैसे हो जाएगा? मैम 7 साल में प्रोफेसर हो सकते हैं क्या? हाँ, ओल्ड रूल्स नहीं, ओल्ड रूल्स है वो अब इम्प्लीमेंट होंगे इन दिस ईयर, फ्रॉम दिस ईयर। आपके पब्लिकेशन है कोई? जी, कितने I have 8 publications? publications. I did
4 research work when I was नहीं, 8 assistant. publication, out of 8 how many publication as a principal author? Uh, one publication as a first author and 3 publication as a second author. Okay, When and I was all these have been published between associate professor and professor. yeah, 4 publication between associate professor and professor, and one is as an first author and 3 are as in second author. How many years you was associate professor? Associate 3 years. 3 years. 3 साल में आपने 4 पर्चे छापे, जी और ये जो जो जर्नल्स थे ये एमसीआई अप्रूव जर्नल हैं? जी कॉपरनिकस एडवांस जर्नल ऑफ एडवांस मेडिकल एंड डेंटल रिसर्च मेरे पब्लिकेशंस है एंड इट इज ऑथराइज्ड. नहीं, जर्नल्स एक बार आप मुझे बताएं कौन कौन से जर्नल में है पेपर? जर्नल ऑफ एडवांस मेडिकल एंड डेंटल रिसर्च मेरा फर्स्ट पब्लिकेशन इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी. एडवांस मेडिकल एंड डेंटल रिसर्च. या अच्छा, डेंटल ये कॉपरनिकस में है? कॉपरनिकस या. अच्छा, और have you done any training on the medical education? Yeah, I did medical education training in मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली. उसके बाद जब मैं सरस्वती में थी तो हम ही ने कंडक्ट कराया था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने हेड के गाइडेंस में, तो वो भी मैंने किया हुआ है. जो एमसीआई रजिस्टर्ड सेंटर हैं उनमें से मौलाना आजाद से करी आपने? जी, एंड सरस्वती भी रिकॉग्नाइज था. जी ठीक है, ठीक है. अग्रवाल सर. Sir, should we call the next candidate? ठीक है. Dr. Sonia. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Sir, Dr. Sonia is coming. She is associate professor at this institute. Sonia Singh. That's a भाई. And this, introduce yourself. I'm Dr. Sonia. I've done my MBBS from KGMC Lucknow, and I have done my MD from GSVM Medical College, Kanpur. Increase your volume, Sonia. We can't hear you. Everybody can hear her. I cannot hear her clearly. क्या बोल रही नहीं समझ में आ रहा. Speak loud. थोड़ा दूर रखा है ना है. दूर रखा है इसलिए थोड़ा नजदीक कर लो यार माइक. सिस्टम को नजदीक करो. सिस्टम को थोड़ा पास में ले लो. सिस्टम. Good morning, everyone. I'm Dr. Sonia Singh, Associate Professor in the Department of Physiology in the Institute of Medical Sciences. I've done my MBBS from KGMC Lucknow, and I've done my MD from GSVM Medical College, Kanpur. Can we see you? Open your camera also. Can we see you? Yes, Ma'am, camera is open. You can pin her, then her picture will become large. You can pin her, then picture will become large. Okay, pin her then only. Okay. हाँ, पिन कर दीजिए मैम, तो ये बड़ी दिखने लगेगी. मैंने पिन कर रखा है तो बहुत अच्छा फोटो आ रहा है. अच्छा ठीक. ये कहाँ है भैया? पिन कहाँ है? पिन बना होता है. बताओ. एक पिन बना है, एक पिन टाइप का बना है, उसको क्लिक कर दीजिए बस. या सर. So continue Sonia, continue. बोलो. पिन है. Yes, ma'am. बोलो, तुम बोल रही थी कुछ. बोलो. Yes, ma'am. Now, am I audible, ma'am? Yeah. Okay. Ma'am, I said that I'm working as associate professor in Hind Institute of Medical Sciences, and I have done my MBBS from King George Medical University, Lucknow, and I've done my MD from GSVM Medical College, Kanpur.
Since how long you are working in Hind? So since 5 years, almost 5.5 years, I've Five completed and in a Hind half Institute. years. You Yes, sir. joined as a assistant Joined professor. as assistant professor in 2016, Okay. and I've completed. I was promoted to the post of associate in 2020 March. Okay. So Sonia, have you done any course in the medical education? Yes, a medical education technology course that was done through KGMU. We have conducted that workshop. I have participated in that, and last Okay. time I had also worked. I had also presented a topic also in that. Okay, that's good. At KGMU in guest house. Yes, sir. So she has been your student. Yes, sir. Sonia, what is SWOT analysis? What is Yes, SWOT ma'am. analysis? What is SWOT analysis? SWOT analysis. S stands for, W stands for, O stands for, and T stands for. It's a part of medical education training. Okay, what is PBL? What is Sorry, ma'am. PBL? Full form of PBL. PBL. Yeah. Yeah. L for learning. L for learning. PB bacha. NMC says, MCI used to say earlier that we should teach the students by PBL. Ma'am, they have started saying that we must teach them problem-based learning. तो वही Yeah, तो है very मैडम good. कह रही है भाई. Problem-based वही learning. पूछ रही थी मैं. So instead of तो giving didactic lectures, we must have interactive talking. तो with the प्रॉब्लम students. बेस्ड लर्निंग को ही तो मैडम पीबीएल कह रही थी, उसी का फुल Yes, फॉर्म ma'am. पूछ हाँ, रही थी. I तो thought it is इसको कैसे PBL. करते हैं? Sorry, ma'am. या कैसे करते हैं? कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं हर साल? 150 In students are there. 150. 150. Yes, Okay. batch of So 150 students. yeah. So how do you plan to do PBL in your class? If you are asked to arrange for PBL, what arrangements will you make for PBL? Either we can do a large group discussion like flipped classroom teaching, in which we first of all ask the students to read a particular topic. We ask them to read a particular topic beforehand only, and when they come in the class, when they come in the class, then we give them a certain problem, like for example, they are given a case scenario or a lab report. For example, if they are being told to tell the type of anemia, so they are given a case scenario, just such and such patient comes to the pathology and presenting with MCV so and so, MCH, MCHC, all the color indices they are being told, and they have to interpret as to what kind of anemia it is according to the general blood picture. So then they will So be told. So this kind of problem-based learning, or maybe they बच्चे are ने told बड़ी चालना है, आज को ना उपमा बना and दो they संडे को बोले interpret तो अम्मा को भी दे देंगे whether it हमारे. is a respiratory kind of a case, हाँ or वही some उपमा मंगा रही. motor system examination needs to be done in that, or it small group नहीं discussion may मैंने तो also be बोल दिया done, था उसको, पता नहीं क्या देर कर रहा in है. which 8 to 10 students 8 to 10 students are allotted, and they are given a certain topic. All the groups are given different topics, आपने मुझे and they बताया था कि मैं आ रहा हूँ, दो मीटिंगें रखी हुई हैं गूगल पे, और प्लस वहां जाना है, रेलवे जाना है. बताया ही नहीं किसी ने आपको, मेरे को कि मेरे को आज आना I है. request all other to keep muted so that the meeting can happen. yes, sir. Please mute. Others should mute. Only Sonia and the one who is asking should be open so that there is no disturbance in the middle. Sorry for the interruption. Sonia, what Sahib, you are saying very correctly that it is a small group thing. What is the role of the teacher here? What does the teacher do actually here?
Ma'am, like beforehand, teacher, as teachers, we used to speak all the matter ourselves only. But now, teacher has to play the role of only facilitator. We have to only Yes. facilitate the problem. We have to make them oriented towards the problem, and then the students themselves have to discuss. So it's a kind of a student-centric approach. Right, right. So, are you doing, presently, you are associate professor there. Yes, ma'am. How many papers have you published? Ma'am, 3 papers. 3 papers during which period? As assistant professor. As Just now assistant I'm working on a paper, and I'll soon be publishing that. Okay. What do you mean by impact factor of a journal? Impact factor is it's a kind of, it tells that how much relative importance of a journal is there, and it also measures the frequency as to how many times an article has been cited in a given period of time. That is impact factor, and it can only be given for a journal which has been publishing for last 3 years. A new journal cannot give an impact factor. If it is less than 1, it's very average. If it is 3, it's a good impact. And if it is more than 10, then it is excellent. Hello, 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 Yes. hello, Yes, hello. thank you. Are you audible to us? This is Dr. Agarwal. Okay, sir. Good morning. Myself, Dr. Shakil Kidwai. Dr. Agarwal. Yes, sir. Good morning. You are most welcome, sir. I could not get the link at least. So I want to ask Sonia something. You joined little late. So, sir, you are most welcome. And I'm not. I'm trying to. See you today after a very long time, sir, because you have been my teacher. I know. So, sir, right now. Excuse me, doctor. Excuse me. Principal sir. Yes, sir, ma'am. कहाँ मैडम कहाँ है? तिवारी मैडम कहाँ चलेंगी? वर्मा सर. Madam Tiwari, please show your Ma'am. screen. Hello, good morning, madam. Good morning, ma'am. Good morning, रिचा जी. कैसी हैं आप? I hope you are बस बढ़िया हूँ fine. मैम. बस मैंने कहा आपको गुड मॉर्निंग कर लूं और बात तो हुई अभी हुई है, बस पता नहीं समझ में नहीं आया था मेरे. आप लोगों को मैडम ये इंटरव्यू आप लोगों को लेना है. मैं आपको बस एज ए ज्वाइनिंग एज ए ज्वाइन करे रहूंगी. मैं म्यूट पे रहूंगी. बस मुझे रहना है, इससे मैं रहूंगी बस जस्ट. हाँ, और दिखते भी रहिए. कैमरा ऑन रखिए, तब तो लगेगा कि आप हैं, है ना? तो म्यूट करके कैमरा नहीं कैमरा ऑन है, लेकिन मैं ना जा रही हूँ जरा सा रेलवे हॉस्पिटल में. मेरे को थोड़ा सा सिग्नेचर करने जाना है एक MOU पे. तो कैमरा ऑन है, लेकिन जस्ट आई एम ऑन द वे. तो मैं म्यूट कर रहूंगी अपने को. तो बस मैंने कहा था मेरी अटेंडेंस है. आई एम हियर विद ऑल ऑफ यू. लेकिन ये काम आप लोगों का है. जस्ट आई एम हियर ओनली. हाँ, वर्मा सर कहाँ है? नरसिंह वर्मा सर. गुड मॉर्निंग सर. हेलो सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बस मेरी अटेंडेंस लगा लीजिए आप. आई एम हियर. डॉक्टर अग्रवाल. सर गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सर मैं कॉलेज की सर चेयरमैन हूँ, चेयरपर्सन हूँ. अग्रवाल सर आपसे I met before. अच्छा, चलिए. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. तो ये सर last time I सेक्रेटरी came अप्रूवल है. for the interview. ओह थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. तो सब आप जानते हैं सर. फिर तो वर्मा सर मैं बस आपको एक चीज बताना चाह रही थी कि हम लोग सर एक्सपीरियंस हम लोग डेट ऑफ परमिशन से वो करते हैं, नॉट फॉर रिकॉग्निशन. क्योंकि रिकॉग्निशन तो 5 साल बाद होता है. डेट ऑफ परमिशन जब मिल जाते हैं, लेटर ऑफ परमिशन LOP से टीचर को एक्सपीरियंस मिलने लग जाता है. तो LOP कब मिला है आपको? हमारा सर 2015 का LOP है. अच्छा. जरा मुझे बात करने दीजिए. कैंडिडेट से मेरी बात नहीं हुई है, बात करा दीजिए. नहीं आप बात करिए सर. मैं बस वर्मा सर को ये बता रही थी कि लेटर ऑफ रिकॉग्निशन से नहीं, लेटर ऑफ परमिशन से है सर. तो एक्सपीरियंस हम लोग उसी दिन से काउंट करेंगे, चाहे यहाँ का हो चाहे कहीं और का भी हो. अगर किसी को लेटर ऑफ परमिशन मिला है तो उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है. बस इतना ही है बोर्ड का नॉर्म. नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप मुझे कैंडिडेट से बात करने दीजिए.
हाँ, अब आप बात करें सर, मैं तो बस एक पुरानी वाली डॉक्टर जयंती के केस में कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैं बता रही हूँ अभी आपको। जी जी ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ सर, इस पे ही हूँ, बस आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ। नो नो हाँ हेलो Yes, good morning, sir. मॉर्निंग कौन डॉक्टर सोनिया Yes, sir. I'm Dr. Sonia. व्हाट सब्जेक्ट यू आर टीचिंग नाउ डेज Sir, I'm teaching central nervous system. Central nervous system. हेलो व्हाट Sir, सब्जेक्ट यू आर टीचिंग I have taught renal system, renal physiology, and आप also जरा I आज जरा तेज बोलिए sir, I'm teaching. I have taught renal physiology, and currently I'm teaching central nervous system. अच्छा you have not taught since your papers are on diabetes mellitus Yes, sir. so you have not taught diabetes No, sir, I have not taught yet. all right you tell me what is the effect of diabetes on the peripheral nervous system and how So diabetes, in diabetes mellitus, uh, there are micro organ damages are there in various organs. some disturbance is there some voice is uh, masking my voice बाकी लोग अगर अनम्यूट नहीं करेंगे तो मीटिंग नहीं हो पा रही है। सभी लोग अनम्यूट रखें, एक ही जो बोल रहा है वही अपने को अनम्यूट करे, बाकी लोग म्यूट रखें तभी हो पाएगा। हाँ हाँ जी हेलो Sir, in diabetes mellitus, because of the डायबिटीज increased, mellitus का yes, sir. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है So there is peripheral neuropathy in which all the peripheral nerves are affected. So patient comes with the complaints of uh, what tingling is the sensation. pathophysiology what is the pathophysiology behind it So because of the increased amount of glucose present in serum, there some advanced glycation end products are formed, and they get deposited in the tissues that give rise to this neuropathy problems. It which may be tissues which tissues subperipheral tissues, and in also peripheral organs damages, then microvascular and but macrovascular but complications. but this is the disease of the peripheral nerves so what happens to the peripheral nerves So mainly neuropathy occurs in this. neuropathy so I'm just asking you what is the pathophysiology of neuropathy what changes occur in the nerves peripheral nerves due to diabetes mellitus So actually, what happens, that tingling sensation? no Uh, sensations are different things yes, sir. you just do the PM postmortem then what changes you will get in that So nerves they become edematous, and idiomata. Okay. yes, So in at what part? yes, What sir. are the layers? On in which layer this occurs? Sorry, sir. On which layers this occurs? So on the Can you tell me the layers of the peripheral nerves? perineurium part is Huh? affected. So perineurium is affected. Perineurium is affected. So what the fluid is deposited where? In between? Hello. Sorry, sir, the voice is not clear. All right. What is the effect of diabetes mellitus on renal system? Since you are teaching the renal system, Yes, sir. so what is the effect on the renal system? So on the renal system, sir, the glomerular filtration rate goes down because more and more glucose gets secreted into the renal tubules. So GFR goes down, and that condition comes to be later called as the diabetic kidney disease, in which the serum creatinine value goes up and the normal functioning of the nephrons is affected. So what effect occurs on the nephrons? Normal functioning means what effect? So the urine What formation, rate of urine formation, that is affected. That means the ultrafiltration and then the tubular reabsorption, because more and more glucose is being left in the body itself, and some amount of it also comes out in the urine because the glucose renal threshold is lost, and so the urine also starts coming in the urine, known as glycosuria. how much is the renal threshold? So 180 milligram percent. All right.
So I have listened whatever Dr. Tiwari and Dr. Narsingh Verma were asking you Yes, sir. about your experience and all those things. So technical things your college will see. Okay. Yes, yes. So I, I can I can now ask the another candidate. Sir, so Another candidate. before calling the next candidate, there is one more requirement on behalf of the university. If you feel that the candidate is okay, sir, you just speak one word that you are approved. Okay. So You are is she approved. approved, sir? Dr. Okay. Sonia is approved. Thank you, sir. The next candidate is Next candidate. Rashmi Prakash, and I'm 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 very happy to see your face, Shakil. sir, I am too very happy. After a long time, I am seeing you, and So you very used to happy. teach us But in see, first year. I'm very poor in connecting the link. I was trying from 11 o'clock. So then I Okay. called my daughter. She was very busy. She could collect it, but I could not collect the talks between us. So that is why it was seemed to be delayed. But I was not late. Yeah, Anyway, yeah. you can call another candidate. Who is that? This candidate? Because the time is short, we have to be little faster. Yes. We are maybe 15 minutes. We have another panel to And be. you tell me what is this? Tell So me Sir Rashmi name of the Prakash, candidate. she is Name Dr. of the. Rashmi Prakash, assistant professor in the Department of Physiology. Uh, She is in front of you on the screen. Please introduce yourself. Uh, her name is. What is your name? Please tell me. Myself, Dr. Rashmi Prakash, Assistant Professor in Department of Physiology. Since when you are working here? Sir, I'm working here from 2019. 2019. Ji, You sir. have completed your SRship. Ji, sir, I've 1 year completed SRship. my Ji, sir, I've completed my SRship from Ram Manohar Lohia, Lucknow. Uh, have you published some paper Yes, sir. I have published in 2017 in the journal during International. your during your MD? Ji, sir, during my MD. And Sir, the topic was effect of anti-Islamic drugs on motility of isolated rabbit gut preparation. okay, you tell me what subject you are teaching. Since I have to quicken up. What Uh, subject you are teaching? Sir, I'm teaching in physiology nowadays. So endocrine system. Today, Endocrine system. Okay. these, Uh, tell me only one question. What is the difference between the Lorendorf and the cretin? sir, What is the difference between the Lorendorf and cretin? Sir, in Laurentov, there is a deficiency at the level of growth hormone receptor. At the growth hormone receptor level, means hormones are producing, but there is no response of target tissues to that hormone. Which hormone is lacking? Somatomedin, insulin-like growth Very good. factors, the Very somatomedin. good. And then another Uh, cretin. What about cretin? sir, Cretin. yes, sir. Uh, sir, Why it the why cretinism occurs? Sir, cretinism occurs due to deficiency of growth hormone. Uh, 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 Growth hormone. no, sir. Cretinism occurs due to deficiency of this IGF factor 1. See? You just think again. You are teaching endocrinology. Cretinism. Cretin. One is Lorendorf. This is the another dwarf. Yeah, जी sir, sir, 1 minute, sir. So cretinism is deficiency of this thyroid hormone. So why Thyroid hormone is you? responsible for So cretinism. what is the major difference between the two when they come in front of you and you can recognize? Um, By their face you can recognize. sir, pardon, sir. Hmm? Sir, Hello.
Sir, can you repeat the question? What is the major difference Major between their difference? appearance when they come to you, Lorendorf and Kitten? Sir, in Lollendorf, sir, there is a growth retardation along with short stature, short hands and feet, whereas What is in the mental status? Mental status. so mental status in yeah, cretinism is these patients will be mentally retarded, whereas Ah, in yes. That's what I wanted to ask you. Okay. Okay, you are approved. Go. Next thank you, one. sir. Okay, thank you. Thank you, Next sir. one. अग्रवाल सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट करनी थी। जी सर ये जो अभी हो रहा है ये केवल जी हम लोग को इनकी क्वालिफिकेशन और वो देखना है कि अप टू नॉर्म्स है कि नहीं है, ये अच्छा सिलेक्शन इंटरव्यू नहीं है सर। तो हम अच्छा लोग देखें कि इनके क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, एक्सपीरियंस के नहीं हो रहे हैं बस। हाँ और आपने सबको कर ही लिया है। जी नहीं सर, मैं हमने सबको किया नहीं है। जस्ट आई वांटेड टू से दैट ये हाँ इंटरव्यू नहीं है तो हम लोग अपना टाइम बचा सकते हैं, इनसे सब्जेक्ट हाँ पूछने की आवश्यकता नहीं है सर। केवल ये जी देखना है कि जी रिक्वायरमेंट है, मान लिया एमसीआई का सर्टिफिकेट वगैरह वो सब है कि नहीं है बस। जी जी जी। थैंक यू सर। तो मॉर्निंग में तो देख लीजिए वो हाँ, आपने देख लिया है डॉक्टर साहब, डॉक्टर वर्मा, हम लोग डॉक्टर साथ ही वर्मा। बैठे हैं। ये सर प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, जी मैम, जी मैम। एक कैंडिडेट को लेट द कैंडिडेट बी एक्सपोज टू ऑल द एक्सपर्ट्स, है ना, सो दैट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ। नहीं आप बैठिए, आप बिल्कुल बैठिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब जैसे ये उठ के चली गई थी तो फिर वापस लौट कर आई है। डॉक्टर डीके अग्रवाल साहब ने पूछ लिया, यू हैव टू वेट फॉर द अदर एक्सपर्ट्स टू question you, say one or two questions from them also. So please यस be यस prepared to face the other experts also. Don't move off. ठीक है। और प्रिंसिपल साहब आप और आ सकते हो बीच में, so that we can see both of you very well on the screen. You are free to ask any Dr. question. D.K. Agarwal has finished with her. I think we should continue. यस Dr. यस Varma, श्योर श्योर हाँ श्योर तो श्योर प्लीज मैडम श्योर। बाकी नमस्कार। लोग हाँ बाकी लोग नमस्कार म्यूट कर ले। नमस्कार डॉक्टर सुनीता तिवारी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब, आपकी शक्ल तो दिख नहीं रही है। नहीं, आप दिख पता नहीं गई, आप दिख गई नहीं दिख रही है। है? चलिए कोई बात नहीं, नमस्कार। योर दिख गई नहीं दिख गई? नहीं दिख रही है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार सुन लिया, जवाब भी दिया। अब कैन आई आस्क यू समथिंग? She is Dr. Ankita Prakash, AP at this institute. ये डिफरेंट कैंडिडेट है मैम, पहले वाली नहीं है, डिफरेंट है। तो पहले वाली का हो गया? ये पहली वाली को मैम बुला दें, वो अभी चली गई हैं, आप कहिए तो बुला दें। ओके, तो आप प्लीज टेल मी योर नेम। मैम डॉक्टर अंकिता प्रकाश। आइए जोर से बोलिए। अंकिता, यस मैम। गुड मॉर्निंग। अंकिता यस मैम। ओके, अंकिता, you are assistant here or what? Yes ma'am, assistant. What are you? Assistant professor. Assistant professor. What are your how many years of experience do you hold? Ma'am, 2 years. When did you join this place? Ma'am, here I joined on 1st February 2021. This year only. Okay, so at the time of joining here as assistant professor, you had 2 years of post PG experience. Yes ma'am. Yes ma'am. Ma'am, 2 years as senior resident in RML, and then 1 year as assistant professor in Mayo Medical College. ठीक है, it's okay. So you already have, and here you are assistant professor, right? Yes ma'am. Tell me, you must be teaching here to the students. Yes. Have you done all the requisite courses which the medical council says has made it mandatory? Medical education, training, etc., etc. Medical education में this year I'll do, मतलब अभी तक तो मैं मेरा enroll नहीं हो पाया कहीं पे भी। Okay, so for your information, you are in Lucknow.
So KG Medical University is the nodal center for training students like you or the teachers like you. You Yes, can ma'am. be on the lookout on the website कि I कब was कब searching निकलता for है it. और आप अप्लाई करके आप बिल्कुल करिए. ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, isn't Yes, it? ma'am. So can you show me your degree, a PG postgraduate Yes, yes, ma'am. degree, Ma'am, and of course medical council registration, PG अच्छा. Yes, registration. ma'am. Yes, ma'am. Degree or registration? अंकिता. ये डिग्री और रजिस्ट्रेशन. ये तो वो है फॉर्म जो भरा डॉक्यूमेंट्स में है ना. और आगे और आगे. हाँ ये पीछे जाइए. ये तो ये हाँ ये प्रोविजनल डिग्री के नीचे वाला रजिस्ट्रेशन है. ठीक है. ये हाँ देख लीजिए हमको. मैम बोल रही. Ma'am, this is my. I have done MD from SN Medical College, Agra. So they provide this provisional degree. मतलब Okay. I'm not have, registration. have you registered your PG in Yes, ma'am. medical council? Yes, Show me ma'am. that. This is Show me that. registration. Show me that. ये नहीं नीचे जाइए और है. दूसरा ये मैम दिस इज PG registration. I can't ask him to share. Ask him to share it. दिख नहीं रहा है. शेयर करें. This is MBBS. Sir, this is PG. दिखा शेयर करो बेटा. नहीं दिखा नहीं. मैम कर दिया. It is on the screen. Yes, ma'am. नहीं है स्क्रीन. एक मिनट. हाँ दिख रही है. हाँ अब दिख रहा है. पिन करने पे दिख रहा है. यस. जरा और ऊपर करिए. जरा और ऊपर करिए. हाँ अभी नीचे करिए. नीचे थोड़ा नीचे. MD Physiology is registered. Okay. ठीक है. Okay. So it's okay. Now you can remove it. Okay. So next we call. Dr. Verma, you can continue. मैम मेरा ख्याल है सारा कुछ आपने पूछ लिया है. कुछ और नया नहीं पूछना है. That's all. Sir, I have done MBBS from KGMC only. I have been your student from 05 batch. Good. नहीं तो सब कुछ तो पूछ लिया गया. केवल रिक्वायरमेंट हम लोगों को देखनी है और कोई हम लोग इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं. केवल ये देखना है कि जो रिक्वायरमेंट रखी है MCI ने वो पूरी हो रही है कि नहीं पूरी. मैडम ने पूछ लिया. आप रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए. आपको 3 साल का. ठीक है. We approve you. You are approved. ठीक है. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. So, thank you very much. We two more candidates, our two tutors. One is Sharad Kumar. And So all the 3 candidates have been completed. we have completed 4. 4 have been completed. No. I talked to one assistant professor and one associate, not another assistant professor. You spoke to Sir Sonia Singh also, and the first candidate of professor that was interviewed before you joined. So if you want, we can. No. I joined. I was listening the interview from Madam and Dr. Verma. But I could not be connected. Yeah. Anyway. Front of you is the candidate Sharad Kumar, tutor at this institute. Introduce yourself, please. Good morning, respected ma'am and sir. My name is. जोर से बोलो. My name is Sharad Kumar, tutor in Physiology department. What is your qualification? Ma'am, MSc, medical MSc. MSc? Yes, ma'am. What? किस सब्जेक्ट में MSc किया बेटा? मैम 2019. किस सब्जेक्ट में? मैम फिजियोलॉजी.
मेडिकल फिजियोलॉजी, यस मैम। एमएससी फिजियोलॉजी में नहीं ना होती है, मेडिकल फिजियोलॉजी में होती है, ठीक है ना? कहाँ से किया? मैम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। Okay, okay, it's all right. So you are a tutor here. What is so you are fulfilling the criteria to become a tutor. कितने साल से ट्यूटर हो यहाँ पे? मैम सितंबर 2019 में 2 साल होने वाले हैं। 2019 से 19, ओके ओके, 2 साल हो रहे हैं। यस मैम। एंड व्हाट इज योर एज? मैम 27। 37? 27। ओके ओके, राइट। डॉक्टर वर्मा, आपने एमएससी इंटीग्रल से किया है? यस सर। है ना? और उसके पहले बीएससी? मैम बीएससी। बीएससी कहाँ से किया? सर अवध यूनिवर्सिटी से, होम डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर। नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी ना मतलब है, सर किसी कॉलेज से किया होगा, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से किया होगा। अवध यूनिवर्सिटी सर, अवध यूनिवर्सिटी। अवध यूनिवर्सिटी का अपना कोई कोर्स नहीं है भैया, कोई कॉलेज रहा होगा। राम अवध स्मारक महाविद्यालय। हाँ, क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी का अपना कोई कॉलेज नहीं है, वो तो केवल डिग्री देने की यूनिवर्सिटी है बस। यस सर। तो एमएससी आपने किया, एमएससी इंटीग्रल से करने के बाद ट्यूटर है, ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो, अभी डीके अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं, बैठे रहिए। हेलो हेलो, हाँ क्या आप कुछ, आपने एमएससी फिजियोलॉजी जो किया था उसमें आपने कुछ प्रैक्टिकल वगैरह सीखे हैं? यस सर, यस सर। क्या लर्निंग की आपने प्रैक्टिकल सी? कौन से प्रैक्टिकल कराते हैं? सर ये प्रेजेंट टाइम पे टीएलसी हो रहा है सर, टीएलसी हाँ? काउंट, टीएलसी सर, टीएलसी टोटल लिकोसाइट काउंट बस और सर ब्लड प्रेशर मेजरिंग एंड स्पायरोमीट्री ये सब नहीं कराते हैं आप? सर अभी होता है लेकिन टर्म में अभी आया नहीं सर। है? अच्छा, नहीं आपने किया है, नहीं किया है अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में? आपने तो किया होगा। Have you been exposed to the experiments or not? नो सर। नहीं सर। वहाँ नहीं किया आपने, वहाँ सिर्फ टीएलसी किया था? सर टीएलसी किए थे और स्लाइड बनाना सीखे थे सर। हैं? हेलो, डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन, टीएलसी। आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो खाली ब्लड के एक्सपेरिमेंट्स थोड़े कराएंगे आप? जी। उनको क्लिनिकल फिजियोलॉजी भी तो कराएंगे, क्लिनिकल फिजियोलॉजी कराएंगे नहीं कराएंगे? यस सर। हाँ, तो क्लिनिकल फिजियोलॉजी में आपने क्या लर्न किया है वहां पर? कौन कौन से एक्सपेरिमेंट लर्न किए हैं? सर ब्लड प्रेशर, हाँ, क्रेनियल नर्व और जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन किया है कुछ, और सर और कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन और रिस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। अच्छा, एनिमल्स में तो होता नहीं है, लेकिन एनिमल्स के जो एक्सपेरिमेंट हैं उसके बारे में कुछ जानना पड़ता है, वो आपको आता है नहीं आता है? मसल के एक्सपेरिमेंट। सर फ्रॉग में होता है, गैस्ट्रोनिमियस मसल्स होते हैं सर। हाँ, तो उसका आपको आता है नहीं आता है? सिंपल मसल कर्व। नो सर, एक्चुअली में सर कराया नहीं गया था, इंटीग्रल में सर कराया नहीं गया। नहीं कराया तो नहीं गया होगा, लेकिन आपको कम से कम एक्सपोज तो किया होगा, बताया तो होगा सर। जी सर, मतलब ऐसे ही डेमो दे दिया गया था सर। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन तो आपको बच्चों को देना ही पड़ेगा ना, उनको सब बताना तो पड़ेगा ही। यस सर। है, स्पायरोमीट्री भी किया नहीं किया? सर स्पायरो हमने नहीं किया, बट अभी यहाँ होगा। बेटा ऐसा है ना, एनएमसी की गाइडलाइन में अब आपका वॉल्यूम रिकॉर्डिंग भी होती है। यस सर, यस सर। समझे? तो आप एनएमसी की, आप एमसीआई की नहीं, या एनएमसी की गाइडलाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यस सर। तो आपको ये सब लर्न करके बताना पड़ेगा। एनएमसी की जो प्रेजेंट गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन। थैंक यू सर। क्योंकि क्लिनिकल फिजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी और जो भी एक्सपेरिमेंट्स
जो आपका आपके क्लिनिकल में नए आ रहे हैं उनको भी अभी तक आपको कितना मिलता है? ठीक है ना, 24,200 नर्व कंडक्शन वेलोसिटी का भी है। ठीक है, और जैसे पीसी सर ने अभी ठीक है, 30,000 किया था मेरा, तो इसलिए नोट्स इसमें लगी नहीं है क्योंकि सर इन्होंने वो गड़बड़ कर दिया था, नहीं तो पिछली बार सर 35,000 किया था सर ने। सर्टिफाइड नहीं मिल रहा नेक्स्ट कैंडिडेट सर वो उसके पास से मिल नहीं रहा उसके हिसाब से सर, इन लोगों ने अपने हिसाब से चला लिया है वेलफेयर सोसाइटी ने, वो नोटिस मेरे पास पड़ी हुई है सर अभी भी मालूम। Sir, he is the last candidate now in front of you coming. Piyush हाँ Kumar. बताइए। He is again a tutor. He is coming. I have called him. क्या नाम है? Piyush Kumar. मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ श्रीमान। आइए ये बात सही है। बैठिए बैठिए। My colleagues and Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को प्लीज, अदर्स प्लीज इनिशिएट कहाँ से होगा ये हम सोच रहे Yes, हैं। ma'am. I am Piyush Kumar. नाम बताइए। My इन्होंने चाहिए। PG from Himalayan हेलो, University. मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा साइन करो। नाम बताइए। है? मेरी तरफ से बिल्कुल रिक्वायरमेंट मैं जानता हूँ। मैं बात किया था, पिछले साल अच्छी सीट नहीं मिली कर्मचारी तो नहीं किया, एग्जाम देने की तैयारी बहुत कर रही था क्योंकि जनरल इसलिए बहुत मुश्किल होता था। अच्छी नाम बताइए। कितनी जगह Sir, Piyush Kumar Mishra. Piyush Kumar Mishra. पीयूष कुमार मिश्रा, जरा जोर से बोलिएगा, आवाज कम आती है, या माइक अपने पास कर लीजिए। पीयूष कुमार मिश्रा, आपने क्या किया है, क्या पास किया है? सर मेरा बैचलर्स जो है सर वो मेडिकल माइक्रो से था एंड मेरा जो सर एमएससी है वो मेडिकल फिजियोलॉजी से है। कहाँ से किया है? सर बैचलर्स जो मेरा मेडिकल माइक्रो है सर वो CSJMU से है सर, कानपुर यूनिवर्सिटी, एंड मेरा जो सर एमएससी है वो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर हिमालयन यूनिवर्सिटी से। एक्सक्यूज मी प्लीज, अदर्स प्लीज, सुनाई नहीं दे रहा ये बच्चे का क्या बोल रहा है, कांट हियर। मास्किंग हो रही है एक्चुअली। बहुत लोग बोल रहे हैं ना, साथ में सबके माइक खुले हैं। उसको ये जो करेगी ईडब्ल्यूएस जनरल को सीधा काम करवाई होगी। बीडी सिंह साहब का म्यूट हो जाए तो उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। Other members kindly unmute so that the person who is asking the question he will be audible to everybody. मामूली आदमी है, हार्ट के मरीज है। हेलो, अगर आपकी आज्ञा हो। सर मैंने अभी 24 से ही जस्ट ज्वाइनिंग की है सर, आई एम न्यू ज्वाइनिंग हियर एंड सर मेरे जो रिजल्ट्स आए थे वो सितंबर में ही आए थे सर, तो आई एम जस्ट अ फ्रेश ही हियर सर। देता हूं, हो सकता है कोई आने वाली ना दे, तो अगर आने से मतलब नहीं, यहाँ इसको रोकता नहीं। मैं बरोबर रख लेता हूं सर, हो सकता है कभी भगवान बचाए मुझे। नहीं, हम इंसान ही बने ना भगवान बचाए। सर डॉक्टर तो वैसे ही भगवान होता था। खुलवा के एक बार पढ़वा दीजिए, मुझे बोलिए से लोग बोलने की थोड़ा अच्छा होगा सर, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जब कोई बहुत अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम तभी आपकी सहायता करूंगा सर। हेलो, यस सर। हाँ कोई पूछ रहा है क्या? आपको तो मालूम है ना क्या पढ़ाना है आपको? सर अभी जस्ट न्यू शेड्यूल सर आज ही मतलब पब्लिश हुआ है सर, आज ही मुझे हाँ। मिला है सर न्यू शेड्यूल सर। आपने देख लिया न्यू शेड्यूल? नहीं सर अभी मुझे मतलब लाइक अभी मैं न्यू हूं तो सर मैं ग्रुप में भी एडेड नहीं हूं, तो मुझे शेड्यूल सर अभी मुझे SDL क्लासेस क्या होती है? SDL अच्छा सर मैं रिजल्ट आने के बाद आपसे मिलूं सर। आई डोंट नो है? सर। वो आपको लेने पड़ेंगे। ओ सर दैट स्मॉल डिस्कशन हाँ, तो स्मॉल डिस्कशन लेटर लेक्चर्स लेने पड़ेंगे आपको, है ना? पोर्टल मिल जाएगा, पोर्टल अपनी सूचना अपलोड कर दीजिए, नए शेड्यूल में आएंगे और आपको पढ़ाना पड़ेगा। यस ठीक है ना? और ऑनलाइन में हम पूछते हैं, ऑनलाइन में जो कुछ पूछा जाए। ठीक है, डॉक्टर वर्मा पूछे कुछ पूछना चाहे, मैडम पूछिए, क्या पूछे? सर हम लोग केवल इतना देखना है कि इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही। तो रिक्वायरमेंट अगर पूरी करते हैं
कोई मतलब नहीं है। हैं? बीबी साहब क्या जो प्रवचन चल रहा है उसके चक्कर में कुछ सुनाई पड़ नहीं रहा है। जी तो ये कह रहा था कि बस केवल रिक्वायरमेंट हम लोगों को देखनी है। रिक्वायरमेंट अगर पूरी करते हैं तो फिर जी और कोई चीजें पूछने का कोई बहुत औचित्य नहीं जी है। जी ठीक है। ठीक है सर। So is it ये okay, एमएससी sir? फिजियोलॉजी है, देख लीजिए। अब एनएमसी के एमएससी फिजियोलॉजी जो है वो अभी जो नियम है नया एनएमसी का, उसमें 15% से ज्यादा फैकल्टी में नहीं हो सकते हैं। तो यही देखना है बस, और कुछ नहीं। जी एमएससी फिजियोलॉजी ट्यूटर हो सकते हैं, उनको मना नहीं है, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। So is it okay, sir? Yes. All the expert members of this panel. Hello. Sir. हाँ बोलिए। Sir, as per NM. Hello. Sir. हाँ बोलिए। हाँ ऋचा मैडम बोलिए। हेलो। Hello. Ma'am, you are not audible. I think there is some connectivity problem. हेलो हेलो। Hello, sir. I think there is some connectivity problem. Ma'am is not audible. And if you are all satisfied, should this interview panel be over? Okay. Yes, I think it's okay, so long as we are fulfilling all the criteria of the given by the National Medical Commission. That is, Dr. Verma, have you seen clearly that it is 15% of the total strength of the staff? अब टोटल स्ट्रेंथ मैम इनके यहाँ जो है, एक प्रोफेसर है, एक एसोसिएट है, 2 असिस्टेंट है, तो 2 और 2 4 5 लोग हो गए। 25% में हाँ, समझो लेकिन मैम कि जो हम कह रहे थे वो नए उसमें लागू होगा, पुराने में लागू नहीं है। यही ऋचा जी कहना चाह रही थी कि ये जो लागू है होगा वो नए रिक्रूटमेंट में लागू होगा, पुराने रिक्रूटमेंट में लागू नहीं। ठीक है, then I think both of them are okay and the whole team is okay in physiology. They are all up to mark so far as their eligibility criteria is concerned. So we can I think we can give them a nod saying that okay, everything is okay. Yeah, approved. Yeah. Okay. ऋचा जी से बात कर लें। ऋचा जी लाइन पे। हेलो। हाँ शकील भाई। जी सर, जी सर। हाँ तो अब थैंक यू वेरी मच, हो गया आपका सर। और Last we have one program, just 1 minute. The group photograph of all the candidates who you have been. It is required. It is required. आप लोग आ जाइए। It is required and with you. बस आप सही रहेंगे। हाँ, ऐसे लो ताकि फोटोग्राफ तो आपका भी आना चाहिए शकील साहब। सर आ रहा है तो नहीं, आप बैठ जाइए प्रिंसिपल साहब, बीच में बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हाँ ठीक है। अब बढ़िया, अब ठीक है, अब दिख रहे हैं। हाँ सही और है। अपना मास्क हटा दीजिए। ऋचा जी नहीं है इसमें। ऋचा जी कार में है। तो वैसे ये चुप रहिए पीछे, आपके पीछे। हाँ यस, बस अब ठीक है, अब पूरे आ रहे हैं 3 3 6। डॉक्टर शकील का फोटो नहीं दिख रहा है। दिख रही है सर, शकील साहब की फोटो दिख रही है। अच्छा अच्छा। अब देखिए तो सर, पूरे तो वही हैं। ठीक है। अब मैंने जब देखा शकील साहब को तो देन आई रियलाइज आई मिस्टेकन हिम। पहले जब आपसे बात की थी तो मुझे लगा कि एक मेरे यहाँ शकील थे, आप वही हैं, लेकिन अब मैंने देखा तो मालूम हुआ दूसरे शकील हैं आप। नहीं सर, I'm very happy and I'm proud of my teacher Professor Agarwal in front of me on the screen. Thank you very much. Thank you so much.
so much. Are you At satisfied? least All the candidates are approved. Yeah, they are. my blessings are always with you, and I think my students care for me. This is the best. Sure, sir. Sure. Thank So you very should much. we pack up? Yeah, I think we should. We have finished with the Okay, sir. process, Thank you very so we much can. once again. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Thank Thank you, you. all. So nice of you. Thank you.